Assalamu alaikum everyone and welcome to FutureServe Overseas Education Services. I am Verda Mazhar and this is Mr. Amar Awais, currently serving as an ESL and IELTS instructor at FutureServe. Welcome, sir. Thank you, madam. Thanks a lot. And we warmly welcome you all once again. So guys, before getting started, let me share a little bit about FutureServe. So FutureServe is basically an educational advisory and we are serving in three broad categories: the career counseling, the international exposure, and the skills development. In the career counseling, we help you find your path your way. Keeping your academic record in consideration, we help you find the most suitable, the most possible disciplines that in which you would like to pursue your higher education abroad. Plus, we also help you find the best suitable universities out there for you. We also guide you through your application processes, about your documentation, your visa processes, and other relevant procedures. In the international exposure, we actually help you relating to the place you are going to live longer. So what we do is we give you the traditional and the cultural tips. We also help you through your post and pre-departure. That means from your departure to your arrival, from your arrival to your departure, everything that is relevant. In the skills development, that is definite. When you're going abroad, you would love to have a little bit exposure with the job market of the place you're going to live. So we actually help you enhance your employability skills, and we also give you some tips through which you can mingle with the job market out there. So this is it about the FutureServe, and thank you for your patience. So guys, the topic for the discussions is statement of purpose or personal statement. So, Mr. Ramirez, Yes, can madam. you please introduce us the statement of purpose? I know that is very important. Okay. Thank you so much, madam, once again for having this fruitful discussion with me regarding the SOP, which stands for the Statement of Purpose. Yeah. In the name of Almighty Allah, who is the most merciful and beneficent, who is the King of the Kings and the King of the Day of Resurrection. Let us start the session today. The topic is all about the SOP, as you have briefly discussed, and you have exposed and you have explained the SOP and the services what we are providing here in FutureServe Overseas Education Services. Yes. SOP is basically the foremost and most highlighted thing which you present and which you provide to the university to get them know everything about you. All right. Basically, this is not a CV. This is actually defining that what you are and why do you want to take admission in a specific country or in a specific university, right? It is all by it has 7 levels, I would say, and I would briefly discuss these 7 points. All right. That how will you be writing a professional and effective SOP. Now, SOP in COVID-19, people say that SOP means the standard operating procedure, but this SOP does not mean the same. Okay. This is the statement of purpose. Yeah. Means why do you actually want to take Exactly. admission in a country? Okay. Why do you want to visit the country, and why do you want to take admission in that specific university? Yeah. Now, basically, the SOP will help you in your credibility interviews. It will help you in embassy interviews, and it will definitely help you to present what you are actually speaking in front of the people. Now, this question may be asked by several amount of people, and number of people can ask the same question from you, that why do you want to go to UK, or why do you want to go to Canada? Why do you want to go to Turkey? I mean, they will just ask the questions according to the same, it's a general topic, if I'm not wrong. Definitely. So they will ask that, all right, if Mr. West wants to take admission in University of West Scotland, I would say, all right, if I want to take admission in Coventry University, so that is okay. I really have to show, and I really have to write something in an effective way to get the university know that why do I actually want to take admission in your university. Now, why am I fundamentally trying to secure my seat in your university, and why is it changed from others? So in standard operating procedure,
as I said before, you know that you have 7 bullet rules which you have to apply. And statement of purpose. Yes, the statement of purpose, Yeah. right? So you will have to apply in the standard, in the statement of purpose, and you have to show the standard of your own actual thoughts that you think. Yeah. Now, Your purpose as well. yes, the Yeah. purpose that you're actually performing and Yeah. you're actually speaking it. Not speaking, but you're writing. Yeah. And you know, you are given it to the university just to make it sure that yes, this is my biography, this is my data, and this is the thing that I really want to take admission in your university. Exactly. Right? So Yeah. the very first stage will be the introduction. Okay, now we are discussing the steps, right? Yes, All I'm right. coming towards the steps. All right. And That's perfect. yes, I will be discussing these 7 points and key points, if I'm not wrong. Okay, the key points. I Yes. think our students should take notes. I about think it. they Yeah. should, Yeah, definitely you guys should. they should take a pen and paper with Yeah, themselves, and exactly. they should write the point that how will they be writing an effective SOP. And important चीज is कि आप उनको एक बहुत ही simple तरीका बताने जा रहे हो, right? जी, easy, very The easy. very easiest जी. best, yeah. सबसे पहले, अच्छा, इन 7 points को start करने से पहले I will throw light on importance of English, that why is English important to write an effective SOP. For example, if you do not have good amount of vocabulary and if you face certain problems in your grammatical rules and regulations, you may face problems in writing the SOP. And now SOP is a very sensitive piece of paper. The SOP is the thing which helps you secure your admission in a university. And if your SOP is not good, they will directly refuse your proposal. Means that you, now suppose if you cannot explain why do you want to take admission in UK, so you know they will definitely refuse your proposal, that you cannot even talk about your own future points. How will you be studying in my university? So SOP is very important. It is a sensitive case, you know. So if you committed mistakes in it, if you did not write it apparently, if you did not write on the rules and regulations that I'm coming to speak on, right, your SOP will be rejected. And you know, it is a very sensitive case, and if your SOP is rejected, it really puts a very negative effect. Your entire application is dependent on these Yes, statements. अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, आपके सब कुछ आपने दे दिया, A to Z डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो आपने दे दी, लेकिन अगर आपका SOP ठीक नहीं है तो आपका रिफ्यूजल आ सकता है. God forbid. जी, God forbid. तो उसमें first of all, a person or the student or whatsoever, whoever is writing the SOP, he or she must have a good grammatical understanding. Now, if your grammar is not good, if you say that I want to take admission in your university, you know, no, this is, you know, the third stage, right? Say, I want to take an admission in your university. So like, you know, if you use taken in place of take, it means you've used a wrong, you know, a word of English communication or the grammatical structures. Yes. The point is that they directly check your thing out and they directly give you a negative point out of it, right? They directly reject it. Okay? So grammar is very important, vocabulary is very important, and number third is sentence structure. Yes, number third is you have to write down the complex sentences. Now what is complex sentence? Complex sentence आप अपने grammatical structures में आप पूछ सकते हैं. First sentence जो है वो आपका dependent clause होगा, बाकी जो दो होंगे वो independent clause होंगे, और आप उस तरह से उनको कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के साथ आप टच करके जो है कंप्लीट सेंटेंस आप उसमें लगाते हैं. ग्रामेटिकल टर्म्स पे फिर कभी डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह. तो आपने कम्प्लेक्स सेंटेंस लिखना है, ठीक है, और आपने इफेक्टिव वोकैबुलरी यूज करनी है, और कोशिश करनी है कि आपने पैसिव वॉइस ज्यादा यूज करना है. मीन्स अगर आप एक्टिव वॉइस यूज करते हैं इसमें कोई ममानियत नहीं है, लेकिन अगर आप पैसिव वॉइस यूज करते हैं तो उसका एक बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है यूनिवर्सिटी पर. फॉर एग्जाम्पल, दैट अ लॉट ऑफ subjects will be taught to me, not a lot, you know. अगर आप a lot लिख देते हैं तो आपने a lot नहीं करना, आपने general discussion नहीं करनी. And this is the same thing which I was discussing with Miss Saira before starting the session. And alhamdulillah, she is very talented lady, and she said that you should not speak a general topic, like you should I mean, you know, you should speak to the point. You should highlight the things which you will learn. And she taught me that if you write that I will learn a lot of things. So in place of learning a lot of things, you should write down the specific subjects names.
that which subjects you will study. Yeah, right. And इसमें अगर आप इस तरह लिख लेंगे तो आपकी SOP जो है वो बड़ी इफेक्टिव हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम्पल दे दें अगर एक क्योंकि दो एक्सपीरियंस मैटर्स, ठीक है। मिस सायरा का काफी एक्सपीरियंस है, या ठीक है। तो उनसे मैंने आज कुछ सीखा, ठीक है। उन्होंने कहा कि टू द पॉइंट आपने बात करनी है, आपने जनरल टॉपिक नहीं करनी। फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट ले रहे हैं तो आप कहेंगे कि आई विल स्टडी द बिजनेस मैनेजमेंट एंड आई विल स्टडी इट्स मॉड्यूल्स, जो आपको याद होंगे, ठीक है। आपने वो पॉइंट, वो सब्जेक्ट के नेम्स आपने लिखने हैं उसमें। फिर उसके बाद जब आप आखिर में जब आप कंक्लूड करते हो तो आपने ये नहीं लिखना कि आई विल इम्प्लीमेंट these rules in my country, नहीं। आपने लिखना होगा कि after studying the business management I will help my business to improve in my country which is all the way run by my father, ठीक है। तो आपने वो बिजनेस, सिर्फ बिजनेस नहीं, बिजनेस का नाम आपने मेंशन करना होगा। फॉर एग्जांपल द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस इन माय कंट्री व्हिच इज ऑलरेडी रन बाय माय फादर। तो इसमें ये है कि आपने टू द पॉइंट उसको डिस्कस करना होगा, आपने एज ए जनरल उसको नहीं लाना। तो ये एक बड़ी इफेक्टिव चीज मैडम से मैंने सीखी, जो कि मुझे नहीं पता थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। थम्स अप फॉर दैट, थैंक यू मैडम फॉर शोइंग मी, फॉर गिविंग मी सच नॉलेज, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने इंट्रोडक्शन की तरफ आना है। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होता है, स्टेप नंबर 1 है आपका, उसमें आपका इंट्रोडक्शन है। अच्छा, इंट्रोडक्शन में ये सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ सेल्फ इंट्रोडक्शन, राइट। यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर एकेडमिक फील्ड ऑफ subjects, like what you studied in your academic field, right? All right. And you have to write how and why it it brings that interest in you. Learn how and why it brings interest in you to take admission in UK, and then you will write that if you agree to obey all the rules and regulations in your in the country that you're taking admission in, right? Okay. So that is that is introduction. You have to write down your own introduction. That is not self introduction basically, but it is you are describing the academic background, right? And in background, yes, this is the stage number 2. Okay. Stage number, the first one is introduction, the second one is the background. The second stage is background, and in background you study about the academic information of the school or college, the things what you studied from the school and the colleges. And मैंने दोबारा वही मैं उस बात को कोट करूंगा, that you have to write down to the point. आपने to the point बात करनी है। I mean आपने as a general नहीं बताना, ठीक है। आप अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस उसमें बताना है, ठीक है। आपने जो है उसमें अपना जो आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो आप करते थे वो आपने उसमें बताना है, जो आपका बैकग्राउंड है, ठीक है। और इसके अलावा आपने स्टडी के बाद अगर इन केस अगर आपका एजुकेशन गैप है बीच में 2-3 साल का या 1 साल का या 6 महीने का whatever, उसमें जो है आपने क्या काम किया, वो जो है आपने वो अपने इतना आया क्यों आया, आप क्या काम कर रहे थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो आपने उसमें मेंशन कर देना होता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको फिर अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको देना होता है जिस जगह पर आप जॉब करते हैं, ठीक है। सो दैट इज द थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल स्पीक इन Urdu and English both, just to make the students understand that what I'm actually talking about, right? So then the third stage is why the course. Why this course? I mean, why? Introduction, background, and why. Introduction, background, and why this course. For example, if I'm related to medical field, so I should go for the medical terminology. I do not have any authority, generally speaking, right? I do not have any authority to go for the economics. I do not have any authority to go for the business management. Why? Because my background is of मेडिकल फील्ड। जो अगर आप मेडिकल फील्ड में, तो आप मेडिकल फील्ड की तरफ ही जाएं। ये नहीं कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, लेकिन कोशिश करें कि आप अपनी फील्ड के साथ जो है वो आप स्टिक रहें, ठीक है। आप उसमें लिखना है, आपने व्हाई दिस कोर्स में आपने लिखना है कि व्हाट विल दिस कोर्स डू in your future and what will you learn after completing this course. यानी आप अगर आप कोर्स करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आप डेंटिस्ट हैं, ठीक है, तो आपने डेंटिस्ट्री तो आपने पेशावर से कर दी, BDS आपने कर दिया, बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी आपने कर दी, नाउ यू आर माशाल्लाह यू आर अ डेंटिस्ट, यू आर अ डॉक्टर, ठीक है। लेकिन उसके अंदर आप फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए जो है आप फिर मास्टर्स के लिए अगर आप जाते हैं तो उसके SOP में जो है आपने लिखना होगा कि आई एम ऑलरेडी कनेक्टेड विद द मेडिकल फील्ड व्हिच इज डेंटिस्ट्री एंड आई हैव बीन परफॉर्मिंग माय ड्यूटीज इन माय personal lab for past this years, this time, ठीक है। And now I want to improve my my medical background in
अब इस डेंटिस्ट्री के अंदर जो है मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आ जाती है, ऑर्थोडोंटिक्स आ जाता है, इसके अलावा ब्रेसेस आ जाते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो है अपना रूट कैनाल ट्रीटमेंट, आरटीसी जिसको कहा जाता है, आरसीटी जिसे कहा जाता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेम्स बनाने हो जाते हैं जिसे बतीसी लगाना कहा जाता है, ठीक है, वो कहा जाता है। इम्प्लांट इसमें एक बहुत जबरदस्त एक फील्ड है, इम्प्लांट, वो जो स्क्रू लगाकर उसके ऊपर दांत को टच कर देते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी फील्ड है। ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपने अपने कोर्स के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट कोर्स को सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप लिखेंगे कि आफ्टर कंप्लीटिंग माय इम्प्लांट, आफ्टर कंप्लीटिंग माय एमएस इन इम्प्लांट, ठीक है, आई विल बी implying those rules in my country and I will give my implant services to my patients. तो अब वो टू द पॉइंट डिस्कशन भी आपने कर ली, आपका रिलेटेड टू सब्जेक्ट भी हो गया, आपका पर्पस भी ठीक है, समझ आ गया कि मतलब मैं क्यों करने जा रहा हूँ, तो मतलब वो एक फ्रेम बन जाता है ना मैडम, आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, वो एक फ्रेम बन रहा है कि पहले आपने इंट्रोडक्शन किया, फिर आपने बैकग्राउंड बताया, फिर बैकग्राउंड के बाद आपने एजुकेशन फील्ड बताई कि यार मैं ये कर रहा हूँ और मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड इस सब्जेक्ट में इसलिए एडमिशन ले रहा हूँ ताकि मैं यहाँ के लोगों को फायदा दे सकूं और वो लोग इससे मुस्तफीद हो सके, ठीक है। तो ये उसका हो गया हमारे पास क्लियर, आई थिंक, राइट? यस, फर्स्ट वन इज introduction, second one is the background, third one is the course, I mean why this course, and fourth one जो है फिर career goals आ जाता है, career goals, हाँ, fourth one is the career goals. अब आपने you have to clearly specify your goal immediately after this course. I mean, you know, when you have completed your course, what will you do after अपना completing this course? तो तब जो है आपका career goals आ जाता है कि आपने इस कोर्स को स्टडी करने के बाद आप यहाँ पर आकर क्या करेंगे, और इस कोर्स को सीखने के बाद आपका मतलब आप में किस तरह की इंप्रूवमेंट आएगी, और आप उन इंप्रूवमेंट्स का वो जो आप सीखोगे, आपने इतने पाउंड्स पे किया, आपने इतना टाइम गुजारा, उसको आप किस तरह से कैश बैक करेंगे। तो वो जो है आपने अपने कैरियर गोल्स में लिखना है, ठीक है। आपने लिखना है कि आपका जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स है उसमें, यानी यू हैव टू राइट डाउन योर लॉन्ग टर्म प्लान्स, जो ठीक है आप लॉन्ग टर्म में अपने उन जो आप सीखोगे उसको आप किस तरह से इंप्लीमेंट करोगे, लेकिन आपने इसको एज ए जनरल डिस्क्राइब नहीं करना, आपने टू द पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑर्गेनाइजेशंस सच एज सीपैक एंड केपीके बिल्डिंग अथॉरिटी, यानी मैंने सीपैक और केपीके बिल्डिंग अथॉरिटी को मैंने जो है पॉइंट आउट कर दिया, हाईलाइट कर दिया, तो उसकी वजह से जो है वो एक बहुत अच्छा एक रिजल्ट बन जाता है। तो जस्ट एन एग्जांपल फॉर माय स्टूडेंट्स कि आप लोग अगर कोई आप लोग अगर आप समझते हो कि अगर आप में ये काबिलियत है तो आप जो है मेरी इस वीडियो से आप लोगों को बहुत फायदा मिल सकता है अगर आप इसको गौर से समझे, ठीक है। सो द फोर्थ वन वाज द कैरियर गोल्स, द फिफ्थ वन वाज, अच्छा ये फिफ्थ वन जो आ जाता है ना, वो आ जाता है कि व्हाई दिस यूनिवर्सिटी। अच्छा, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, क्योंकि देयर आर थाउजेंड्स and I would say millions of universities around the globe. Why do you want to take admission in University of Roehampton? Why? There are a lot of universities in UK. There are, you know, Hertfordshire, Bedfordshire, Sussex, Essex, Coventry, this and that. We have got a lot of universities which FutureServe also deals, right? And you know, why do you want to take admission in University of Roehampton? क्यों? तो फिर आपने अपनी उस यूनिवर्सिटी को एक्सप्लेन करना होता है। अब देखें, स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी व्हिच अट्रैक्ट्स यू, ठीक है ना, ऑलरेडी वेबसाइट्स पे मौजूद होते हैं। यस 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 यस, एवरीथिंग इज अवेलेबल, सब कुछ 0 से 100 तक आपको जो कुछ भी चाहिए वो नेट पर मिल जाएगा। लेकिन नेट से आप हेल्प लें, लेकिन कुछ अपने मेड्यूला ऑब्लिंगेटा का इस्तेमाल भी जरूर करें, ठीक है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल करें। और साथ जो है आपने अच्छा और इफेक्टिव ऐसे आप अपना एसओपी अब तब लिखेंगे जब आप इन रूल्स पर आएंगे। मैं दोबारा से हाईलाइट कर देता हूं, इंट्रोडक्शन, background, why this course, career goals, and then why this university. Why this university? The fifth point is why this university. Yes, why this university. ठीक है, अब why this university में आपने लिखना है, आपने इंटरनेट पर सर्च करना है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो उसकी रैंकिंग क्या है, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, वो और कौन से ऐसे फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जो कि दूसरी यूनिवर्सिटी करती है लेकिन वो एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। क्या कि यूनिवर्सिटी आपको अपना रिहाइश फराहम करती है,
आपको वर्क अलाउड है, या ये तमाम चीजें जो है आपने अपने इंटरनेट पर सर्च करनी है और आपने उस यूनिवर्सिटी के बारे में आपने सिंपली आपने उस यूनिवर्सिटी की तारीफ करनी है। यानी वो इट इज नॉट ए नेगेटिव टर्म, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी अगर बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो आप उधर जा रहे हो ना, ऐसी तो आप नहीं जा रहे। वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी है इसीलिए आपने उसको चूज किया, ठीक है। तो आपने उस यूनिवर्सिटी के बारे में लिखना है कि हाउ डज इट इंश्योर यू टू हेल्प इंश्योर टू गेन व्हाट यू वांट। यानी इस जिस यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या है कि जो चीज़ आप सीखना चाहते हो वो आपको मिल जाएगी। यानी कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे होती हैं जिनकी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर परफेक्ट होता अच्छा है, होता है, बिल्कुल। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं कि जिनकी आगे जो सराउंडिंग्स है वो अच्छी होती हैं, जो कि आपको वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको हॉस्टल दे देते हैं, या जो है वो एक ऐसी खूबसूरत जगह पे होता है कि जिधर सनशाइन एंड ग्रीनरी एंड वाटरफॉल एंड सी एंड ऑल, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन जो है वो जो है ना वो पड़ता है स्टूडेंट पे। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये आपने क्या करनी है मैडम, ये आपने लिख लेनी है अपने एसओपी के जो सिक्स जो उसका अपना पॉइंट है उसमें आपने लिख देना है। तो देखें, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, व्हाई दिस कोर्स, कैरियर गोल्स, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, और उसके बाद आखिर में आप क्या करेंगे, CONCLUSION, इट मींस दी कंक्लूजन। यानी जब आप कंक्लूजन में आते हैं तो इस कंक्लूजन का बहुत बड़ा असर होता है। आप इस कंक्लूजन में क्या लिखना है, सबसे पहले आपने लिखना है टू सम अप व्हाट यू हैव रिटन। ठीक है, मतलब आपका कंक्लूजन ऊपर जो आपने जो कुछ लिखा है ना उसके मुताबिक होना चाहिए, पूरे 5 पॉइंट्स ठीक के है अकॉर्डिंगली जी, आना 5 चाहिए। पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है आपका होना चाहिए। तो इस कंक्लूजन में आपने लिखना है, अच्छा इस कंक्लूजन में आपने क्या लिखना है, इस कंक्लूजन में आपने लिखना है कि जो ऊपर से आपने जो कुछ भी लिखा उसके मुताबिक आपने कंक्लूड किया, और उसके बाद आपने ये लिखना कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैं अपने मुल्क वापस आऊंगा एंड आई विल परफॉर्म माय ड्यूटीज इन दी अप्रोप्रिएट फील्ड, और उस फील्ड का नाम आपने जो है ना उसमें मेंशन करना है कि मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा। जैसे मैंने आपको ऑर्थोडोंटिक्स की भी एग्जांपल दी, मैंने आपको इम्प्लांट की एग्जांपल दी कि बीडीएस तो आपने किया हुआ है, ठीक है, लेकिन आप इम्प्लांट करके आप अपनी सर्विसेज को ज्यादा इनहेंस कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो जाता है, ठीक है। अपना फिर इसमें आपने कंक्लूजन में लिख लेना होता है कि अगर मुझे यहाँ पर स्टडी करने का मौका मिला तो आई बिलीव मुझे बड़ा कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो ये आपका ओवरऑल फॉर्मेट है। और जो सेवंथ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेवंथ जो इसका आखिरी वो है रूल, वो ये है कि आपने प्रूफ रीड करना है। आपने सर से आखिर तक जो है उसको प्रूफ रीड करना है। दैट इज मैंडेटरी। यस, इट इज मैंडेटरी, क्योंकि आपने सर से पांव तक आपने लिख तो लिया, फिर आपने उसके कम्प्लेक्स सेंटेंस को देखना है, आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स को देखना है, आपने वोकैबुलरी को देखना है, आपने ग्रामर को देखना है, आपने उस चीज को देखना है कि आपसे कोई चीज मिस तो नहीं हो गई, बिल्कुल कोई चीज आपसे मिस तो नहीं हो गई। तो ये जो है ओवरऑल आपके जो एसओपी है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आप एक यूनिवर्सिटी को भिजवाते हैं कि ये लो मेरा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कि मैं क्यों एडमिशन लेना चाहता हूं, काइंडली मुझे एडमिशन दीजिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट एसओपी। सर ठीक है, ये तो हो गया, बड़ा बेहतरीन आपने एक्सप्लेन कर दिया, एंड आई एम श्योर दैट हमारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, एंड आई एम डैम श्योर कि उन्होंने ये पॉइंट्स भी लिए होंगे ताकि इंशाल्लाह उनको फ्यूचर में काम आए। ये बताइएगा कि फ्रॉम द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस? अच्छा देखें, ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अगर फॉर एग्जांपल आपने लिख ली ना, आपने वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो आपने यूनिवर्सिटी को भिजवा दी और वो एक्सेप्ट हो गई। ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे आपके क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे। सही हो गया। तो मतलब जो आपने लिखे, फॉर एग्जांपल एजुकेशनल बैकग्राउंड आपने लिखा, कैरियर गोल्स आपने लिखे, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी आपने लिखा, आपने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताया, आपने अपने इंट्रोडक्शन की, आपने उसको कंक्लूड किया, तो वो जो है आपके जहन में बैठ जाएगा। देन व्हाट हैपेंस दैट यू विल इजीली बी गिविंग द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच विल बी आस्क्ड in the credibility interview. तो अगर आपने SOP अच्छी तरीके से लिखी, if you have written a better SOP, so you will be able to give answers of the credibility interview, which really is a very good rank. Yeah. And it will be asked in credibility interview as well as in the embassy interview. Alright. जी, तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। मतलब ये बात यही है ना कि इसीलिए कहा जाता है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है, यू शुड राइट योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बाय योरसेल्फ, so that you are able to give the interview appropriately. जो कुछ आपने लिखा हुआ है वो उसी के ऊपर रिलाई करेंगे, और अगर एक भी चीज इधर से उधर हो गई तो that means कि आपके ऊपर थोड़ा सा वो सस्पिशियस हो जाएंगे कि भाई इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। अच्छा पता है आपको ये इतना सेंसिटिव है मैडम, इट इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव दैट दे रिजेक्ट विद फर्स्ट गो। And if you receive a refusal, it means it is a negative terminology, and that is the only thing which I personally, I do not want to receive any sort of refusal in my life. So like if I have taught in the
video in today's session. So why not to work on it? Why not to search internet? Why not to give a perfect SOP so that you cannot receive that refusal? Yeah. I mean, that is the only thing which really shows the profession and the perfection of a person. Exactly. That is the point. Yes. Like even अगर हम लोग statement of purpose से हट के भी बात करें, whatever you're doing, be confident about what are you writing, what are you saying, because वो सारा आपकी अपनी एक reflection होती है. आपकी एक Exactly. पर्सनैलिटी है जो दूसरे बंदे के ऊपर एक असर छोड़ रही है कि डेफिनेटली अगर ये बंदा या बंदी ये बाहर जा रहे हैं अपनी हायर एजुकेशन को लेके तो ये कुछ तो करके आएंगे ना, ऐसे ही तो नहीं है कि बस हम लोग इनके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करें. Exactly. राइट? Exactly. तो 100% सर actually. एक और बात, ऑब्वियसली चीजें थोड़ी सी क्रिटिकल हैं. जैसे मैं हूं, अगर मैं पर्सनली बात करूं तो जब मैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखूंगी तो आई डेफिनेटली विल आस्क योर हेल्प. ठीक है, आस्क फॉर योर हेल्प. तो हम एज अ फ्यूचर सेल्फ हम अपने स्टूडेंट्स को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं इन सच फ्यूचर रिगार्ड? सर्व ओवरसीज एजुकेशन सर्विसेज हमारे स्टूडेंट्स को, मैं पर्सनली, क्योंकि मैं यहाँ पर लिंग्विस्टिक्स का जो डिपार्टमेंट है उसको मैं जो है डील कर रहा हूँ. Exactly. और मेरे पास क्लास में बच्चे आते हैं और उनको मैं सिखाता हूँ कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे लिखो. यानी मैं एक रूल पे काम करता हूँ और ये रूल ऐसे है कि इफ यू कैन डू समथिंग बाय योर ओन, व्हाई टू टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स. ये भी बात है, बिल्कुल. अगर आप एक काम खुद कर सकते हो, व्हाई टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स. बी कॉन्फिडेंट ना, वही सीखो बात ना, है. सीखो 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 और सिखाओ ताकि अगला बंदा भी किसी की हेल्प ना ले, वो खुद करे. वो खुद करे. अब मैं क्लास में जो है ये मेरा व्हाइट बोर्ड सामने भरा हुआ है, आप देखें मैंने कल सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और ये चीजें मैंने सिखाई हुई. क्यों? इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ जो है स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि यार आप लोग ये सीखो, इट विल बी हेल्पफुल. नहीं, मैं स्टूडेंट्स से कहता हूँ कि बच्चों ये सीखो और आगे सिखाओ. क्यों? क्योंकि ये तो खिदमत खल्क है ना. हाँ, खिदमत खल्क है ये. तो कीप टीचिंग, कीप टीचिंग, कीप टीचिंग, कीप लर्निंग, कीप टीचिंग, कीप लर्निंग, कीप टीचिंग, कीप लर्निंग, कीप टीचिंग. एंड फर्स्ट रीड देन टीच. यस. और इसी तरह आप आगे बढ़ेंगी और इसी तरह जो है आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी आपके अपने अंदर. आप अपने एक यू विल बी अ बेटर इमेज टू द सोसाइटी. एग्जैक्टली. तो मेन चीज तो यही है ना. एग्जैक्टली. तो मैं भी यही कहना चाह रहा था कि अच्छा, इस एसओपी में एक चीज तो मैं भूल ही गया, उसमें ये कि रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स नहीं होनी चाहिए. या बिल्कुल, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है. जी, रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स. फॉर एग्जांपल अगर आपने एक वर्ब आपने बार 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 इस्तेमाल किया, नहीं. लाइक फॉर एग्जांपल हाउएवर पे हम बात कर रहे थे, पैसिव वॉइस यूज किया तो पैसिव वॉइस यूज करें. लिंकिंग डिवाइसेस आपने यूज किए तो लिंकिंग डिवाइसेस हमारे पास इतने बहुत सारे, आप सर्च करें. टू कमेंस विद, in the beginning, बिल्कुल. however, similarly, Certainly. for instance, consequently, on first hand, on the other hand, in result, to conclude, ठीक है, टू समराइज. कितने बहुत सारे हैं. तो ये चीजें आपने अपने एसओपी के अंदर सिर्फ एक बार यूज करना है, इसको दोबारा यूज नहीं करना है, जो कि एक अप्रोप्रिएट राइटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस है. आई थिंक नेक्स्ट सेशन हमारा क्रिएटिव ऐसे राइटिंग पर है, उसमें मैं ये चीज इंशाल्लाह बताऊंगा. ये चीजें मेरे जहन में है, मैं अपने बच्चों को इंशाल्लाह बताऊंगा. इंशाल्लाह. सो सर ये है कि हम लोग ये मैसेज अपने स्टूडेंट्स को दे सकते हैं कि आप लोग बिला झिझक जिस टाइम मर्जी आना चाहे फ्यूचर सर्व आए, अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे काम करें. इवन हम ये भी बताएंगे कि इफ यू आर गुड एट राइटिंग योर ओन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन सच रिगार्ड, राइट? बिकॉज दिस इज अ मस्ट. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट always try to be confident, be yourself, and remember that failure is an option. अगर आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं, इफ यूर फेलिंग ईच डे, इट मीन्स दैट यू आर लर्निंग एक्चुअली. एंड व्हेन यू आर लर्निंग, दैट मीन्स दैट आपकी तो वाह हो जाएगी, आप लोग माशाल्लाह से अमेजिंग लोग बन जाएंगे. सो नेवर बी अफ्रेड ऑफ योर फेलियर, राइट सर? जी बिल्कुल. अच्छा, इसमें एक पॉइंट है, जो बैचलर्स ऑफ आर्ट्स हैं बीए वाले, उनके लिए 500 वर्ड्स का होना चाहिए. अच्छा. और जो मास्टर्स है उसके लिए होना चाहिए 700 वर्ड्स. और ये सेम चीज मुझे पता चली कि A4 साइज, 2 A4 साइज के आपके साइज पे होना चाहिए. जी. मतलब ये क्या, ये आप थोड़ा सा डिटेल और दे देंगे सर उन्हें और अच्छे से? 700 वर्ड्स. और मतलब जब आप उसको प्रिंट निकालते हैं ना, तो वो प्रिंट 2 A4 साइज पर आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, ठीक है. आई एम श्योर दैट दे आर गेटिंग इट, राइट? All right, so I think this is it for today's session. We did had a very fruitful discussion with Mr. Amar Owais. So guys, feel free to visit our office, FutureServe Overseas Education Services. We are available for you people
from Monday to Saturday from 10 o'clock a.m. to 7 o'clock p.m. ठीक है। And our address is really very reachable. That is Sheikh Yaseen Trade Center, 3rd floor, main Arbab Road stop. You can also visit our website, that is www.fsoes.com. एक So, दो मैसेजेस आए हैं। हाँ ये मैसेज जरा मैं काइंडली बता दूं। जी 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 जरूर जरूर। साइमा शाह कह रही है इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव टॉपिक, फिंगर्स क्रॉस्ड। अवैस करनी मेरा दोस्त है। अवैस भाई थैंक यू सो मच, आप हमारी सेशन को रेगुलरली, अवैस करनी साहब रेगुलरली देखते हैं That's और amazing. वो Thank you रेगुलरली so much. शेयर भी कर रहे होते हैं। Thanks a और lot. Thanks a साकिब lot. अली तुर्की साहब कह रहे हैं ग्रेट ब्रो अमर अवैस, ये मेरा दोस्त है, मेरा बेंचमेट है, मेरा क्लासमेट है। Thanks a lot, brother. आजकल जो है वो टॉफीज की डिस्ट्रीब्यूशन में लगा हुआ है, तो अच्छा। वेरी गुड। ठीक है जी साकिब भाई, थैंक यू सो मच, आप कंटिन्यूसली उसको शेयर कर रहे हैं। आमना जो है वो कह रही है कि सर मेरे एसओपी में मसला है, मैं आपसे आकर जरूर कंसल्ट Yes, करूंगी। you can visit us. यस Yeah. मिस आमना, आप जरूर आ सकती Yeah. हैं। मैडम ने आपको एड्रेस दे दिया है, शेख यासीन ट्रेड सेंटर अरबाब रोड, और इट इज ऑन 3rd 3rd फ्लोर। floor, ठीक है, exactly. और यहाँ पर आप आ सकती हैं, बिल्कुल हम आपकी हेल्प जो है वो ज़रूर करेंगे। और इसके अलावा आबिद शाह साहब कह रहे हैं, आबिद शाह सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच ब्यूटीफुल मैसेज टू ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच आबिद साहब, थैंक यू सो मच। ये आपका लव है, आपका बड़ापन है जो आप रेगुलरली हमारे वीडियोस को देखते हैं और लाइक करते हैं और शेयर भी आगे करते हैं। थैंक्स अ लॉट। और इंशाल्लाह देखते रहिए हमारी वीडियोस इसी तरह। वी विल डेफिनेटली बी गिविंग यू मोर एंड मोर informative things, and I will definitely be training you, and I will definitely be teaching you according to the appropriate rules and regulations, if they belong from SOP or if they belong to any other thing, right? So Exactly. inshallah we will meet you definitely the next time with a new topic. Yes Yeah. madam. Yes, and thank you very much, everybody. Your feedback, your appreciation matters a lot to us, definitely. So guys, stay tuned for more, and I would recommend you to please visit our Facebook page regularly so that you can get the latest updates about our live sessions. So stay connected, be yourself, be happy, and always remember, Future Serves is always and always here to serve you. Thank you very much.